हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आज हम बात करेंगे एनालिसिस फॉर 9th अगस्त। कल का ट्रेड के लिए एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो कल येस्टरडे वी हैड टोल्ड या हमने बोला था कल कि अगर स्पॉट जाएगा 42 के अबव 42 के अबव जाएगा तो इट विल गिव अ गुड अप ट्रेंड, और उसने अप ट्रेंड दिया। आज हाई दिया 79.68 पर 79.68 को होल्ड नहीं कर पाया और क्लोजिंग बेसिस पे आ गया 79.6। और ट्रेडिंग एंड पे हमने बोला था कि कोई पोजीशन ना होल्ड करे आज के लिए। दिस इज़ बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो मैं दिखाऊंगा आपको 1 डे बेसिस पे। सो इफ़ यू कैन सी हियर 1 डे बेसिस के चार्ट का 1 डे का चार्ट इफ़ आई शो यू, तो आपको यहाँ पता चल जाना चाहिए कि लास्ट टाइम जो फॉल आया था वो यही लेवल पे आया था, करीबन करीबन 79.68 लेवल से एक फॉल दिया था हमें। और ये फॉल शायद प्रॉफिट बुकिंग क्या हो सकता है या कुछ बैड न्यूज़, बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज़ in US market this fall could happen, and that is the reason I have recommended today not to hold any position in USDINR. What can happen tomorrow? For that, let's see the 1 hour chart again for our reference. So when I look at the 1 hour chart, it is very clear for us for tomorrow. Tomorrow, a very important level for us tomorrow will be this to watch: 75.55, 79.55. If there is a fall below 79.55, we should be on sell side. Above 79.55, we should be on buy side. But till where we should buy? My suggestion is between 79.55 and 79.63. Do not trade. It's a no trade zone. Our actual buying will be above 79.63. So if we cross 79.63, it is a buy, complete buy with confidence, with a target till 79.80 if it crosses 79.63. Otherwise, my suggestion is tomorrow we have to wait, and maybe if spot goes below 79.55, we can take sell calls on the PE side. So this is the analysis for today. Important levels 79.55 and buying above 79.63, and final target looking is 79.8. That's on the upside. And on the downside, if 79.55 and below is the opening, then first target is 79.45 and second target is 79.35. So 79.35. These are the targets on the lower side that we need to look at. So make sure very clearly you are very clear about this line, which is the most important line from a support perspective, and this support should not be breached for our uptrend to be intact. All right, so let's see what happens in the trade tomorrow. Happy trading to all of you.